Hi viewers, welcome to everybody to my YouTube channel. Today's topic is function of education. आजिर विषय होची function of education. Education function towards the individual, function towards the society, towards the nation, towards the world. At first, towards the individual, व्यक्ति उपरे शिक्षार function कार्य. Integrated growth. The integrated growth is the main function of education. The child should develop integrately. His mental, physical, moral, aesthetic, spiritual, all these qualities should be developed by education to maintain a social life or to be a good citizen in the society. His all-round development in the development of moral, physical, aesthetic, spiritual, all these qualities should be developed by education to maintain a social life. So, integrated growth is the main function of education. Then proper direction. Proper direction is also a main function of education. With proper directions, all qualities in the child should be developed. Without proper directions, the quality of the child can be developed. So, it is also a important function of education. Then, preparation for adult life. Preparation for adult life. It is said that today's child is the citizen of the next day. यह कहा जाए जे आजिर शिशु कालियो नागरिक. So, in future he will be a parents, he will be a father, a girl child will be a mother. So, all qualities should be developed to live in the society, to live in the family. So, preparation for adult life is also a important function of education. Then, function towards the society. समाज उपरे शिक्षार function. Maintaining continuity of life. Education's maintaining continuity of life. All cultural heritage, all traditions, all values can be maintained or can be maintained continuity by education. विभिन्न प्रकार कल्चरल ट्रेडिशन गुड़िक परंपरा गुड़िक सांस्कृतिक गुड़िक आम एजुकेशन द्वारा कंटिन्यूटी करिपारिबा. पुरातन परंपरा गुड़िक आम कंटिन्यूटी करिपारिबा. सो इट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन. देन कंजर्वेशन ऑफ कल्चर. कल्चर संरक्षण, परंपरा संरक्षण. बाय एजुकेशन वी कैन कंजर्व कल्चर बाय ट्रांसमिटिंग टू नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन को आम कल्चर ट्रांसमिट करिपारिबा एवं ताकू कंजर्व कर रखि परिबा एजुकेशन द्वारा. देन enrichment of culture and civilization. Culture and civilization can be enriched by education. We can enrich our culture. आम आम कल्चर को enrich करि परिबा, बढ़ाई परिबा with new experience, नुआ अनुभूति द्वारा by education, शिक्षा द्वारा. Then transmission of culture. कल्चर को आम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करि परिबा शिक्षा द्वारा. Then towards the nation. जाति प्रति, देश प्रति शिक्षार फंक्शन. इन कैलकुलेशन ऑफ सिविक एंड सोशल भैल्यूज. सिविक नागरिक एवं सामाजिक भैल्यू आम शिक्षा द्वारा आम जानी परिबा. बिकॉज सिविक एंड सोशल भैल्यू इज नेसेसरी टू बी ए गुड सिटीजन और टू बी ए गुड पर्सन इन द सोसाइटी. So, it also a important function of education. Then training for leadership. Leadership, the quality of leaderships can be developed by different co-curricular activities in the schools. So, it is also an important function of education because the leadership quality should be developed as childs will faces many problems in the societies, and for the development of society he can take leadership. समाजर उन्नति
से लीडरशिप नहीं पारिब तेणुक ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन. देन इमोशनल इंटीग्रेशन. There are many castes, religions in our country, so unity in diversity. Our country is unity in diversity. विभिन्न जातिर परंपरा लोक मान बास करते आम देश में. तेणुक सबू जाति सहित आम किपर मिसिक रहा सबू धर्म सहित आम किपर मिसिक रहा ताहा होची इमोशनल इंटीग्रेशन. आम समस्त इमोशन आवेग इंटीग्रेट हवा उचित मिसिक रहा उचित. सो इट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन. द नेशनल इंटीग्रेशन जातीय एकता. नेशनल इंटीग्रेशन नेसेसरी टू डेवलप ऑफ ए नेशन. गोटे जातिर उन्नति पाए नेशनल इंटीग्रेशन निहाती जरूरी. द क्वालिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन शुड बी डेवलप्ड बाय एजुकेशन. There are many qualities which can be developed by many co-curricular activities in the schools to develop national integrations among the students. So it is also a important function of education. Then social and emotional service. Social and national service. सामाजिक एवं जातिर सेवा. सोसाइटी इंडिविजुअल कैन बी लिव विदाउट सोसाइटी. गोटे इंडिविजुअल सोसाइटी बिना बास करि परिबो नाही. सो द क्वालिटी ऑफ सोशल सर्विस कैन बी डेवलप्ड बाय एजुकेशन एंड नेशनल सर्विस. वी शुड सर्व आवर नेशन. आम आमर जातिर सेवा करबा उचित. So this quality should be developed by education. Social and national service should be developed by education. Then toward the world, विश्व प्रति education ର function कौन? There are many castes, religions. There are many types of peoples. There are many types of language in our world. By education, इंटरनेशनल ब्रदरहुड आंतर्जातिक भातृभाव शुड बी डेवलप्ड बाय एजुकेशन टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड. विश्व रे शांति पाई इंटरनेशनल ब्रदरहुड्स डेवलप करा जिबा उचित एजुकेशन द्वारा. बिकॉज विदाउट इंटरनेशनल because without the development of international brotherhoods, the world can be live peacefully. International brotherhood बिना world peacefully बास करि परिबो नाही. So it's international brotherhoods or to calculate the concept Vasudhaiva Kutumbakam. To calculate the concept Vasudhaiva Kutumbakam. आमे पूरा पृथ्वी को गोटे कुटुंबकम गोटे परिवार बोली मानिबा उचित. सो दिस क्वालिटी शुड बी डेवलप्ड बाय एजुकेशन. one world one family. one world गोटे पृथ्वी गोटे परिवार एपरी भातृभाव समस्त मन रे डेवलप हेबा उचित एजुकेशन द्वारा. सो दीज आर टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द वर्ल्ड. These all are functions of education. As you know that education is life. शिक्षा हम जीवन अटे. Without education, life is meaningless. शिक्षा बिना life टा meaningless अटे. All qualities to live in the society, to live in the nation, to live in the world. How we live in the world? हम किपरि विश्व रे शांति रे बास करि परिबा, peacefully बास करि परिबा. All qualities is developed by education. सब क्वालिटी गुड़ी को शिक्षा द्वारा डेवलप होता है. So this for today. We will meet in our next video. So please like my video and subscribe my channels. Bye for